Assalamu alaikum, kids. So this right here is October, November 2021. So let's begin. पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. The very first question says a student measures a value for the specific latent heat of vaporization of water. Now latent heat जो है वो वैसे तो हमारे कोर्स में नहीं है, but again usually P4 के अंदर conceptually जो है वो इतना चीज़ें टेस्ट नहीं की जाती. So let's try this question and then we'll decide whether we should pursue this question or not. Student measures value for specific latent heat of vaporization of water. The student pours 100 grams, blah blah blah. ये आपका सर्किट है. यूजुअली जब क्वेश्चंस की, क्योंकि P4 के अंदर हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, the question itself does not give you a lot of information. Once you start doing many questions, you'll realize कि क्वेश्चन जो है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो इतनी ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होती. सो पहले क्वेश्चन पढ़ो और फिर इफ़ नीड भी आप ऊपर जाएं, इन्फॉर्मेशन पढ़ें. वैसे पूरा क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन पढ़ने की कोई ख़ास इतनी ज़रूरत नहीं होती. On figure 1.1, draw a voltmeter connected to measure the potential difference across the heater. So water heater है, power supply है, एंड हमें हीटर की जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए. तो वी कैन जस्ट से दैट ठीक है, पैरेलल में लगता है. सो वी कैन जस्ट पुट वोल्ट मीटर समवेयर अराउंड हियर. ठीक है, लेट्स पुट इट ओवर हियर. जगह यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, बट अगेन यू नीड टू पुट द वोल्ट मीटर इन पैरेलल. सो एनीवेयर इन पैरेलल वुड डू जस्ट फाइन. ठीक है, यहाँ पर कहीं वोल्ट मीटर आप नहीं लगा दीजिएगा इस तरह से. दैट वुड बी रॉन्ग. दिस राइट हियर वुड बी द करेक्ट वन. Student closes the switch. The scales of voltmeter ammeter are shown in figure 1.2. ठीक है, record the readings. So जाहिर सी बात है, अब यहाँ पे 10 और 15 के बीच में 5 divisions हैं. So this right here should be 11, 12, 13, 14 and 15. So I'm guessing that the voltmeter reading must be 13.5 volts. Unit लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो आगे already mentioned है. एंड 4 और 5 के बीच में 10 डिविजन्स हैं. तो you've got 4.1, 4.2, 3, 4, 5 and 4.6. तो this right here is going to be 4.6 amperes. बट जाहिर सी बात है, ऊपर आपने आंसर जो है वो 3 एस एफ पे दिया है, तो यहाँ पे बेहतर ये रहेगा कि आप आंसर 4.60 एम्पेयर्स देंगे. ठीक है, ऑलराइट. सो मूविंग ऑन. Waits for a few minutes, blah blah blah. The students' results are shown in figure 1.3 and 1.1. Mass of beaker and water. Mass m of water boiled away. तो in this case आप सारी सी बात है initial से माइनस कर दोगे यहाँ पे. So you're going to subtract these two values to figure out कि कितना mass जो है वो evaporate हुआ है. So I'm guessing this right here is going to be somewhere in the vicinity of 4.9. ठीक है, हमें यहाँ पे ये मेजर करना है कि कितना डिफरेंस जो है. Complete 1.1 by filling in the value of mass m. We did that on the grid provided. Plot a graph of mass m on the y-axis and t minutes on the x-axis. So mass m ये हमें draw करना है. ठीक है, the mass of m the water boiled and t time, ये दो चीज़ें हमें प्लॉट करनी है यहाँ पे. तो ये वाला मास प्लॉट नहीं कर देना, बिकॉज then your graph is going to be wrong essentially. So we need to do mass on the y-axis and t time on the x-axis. ठीक है, so we are starting off at zeros on both ends. mass जो है वो 9.7 तक जा रहा है, so almost 10 assume कर लेते हैं. टाइम जो है वो 6 मिनट तक जा रहा है. so let's count the divisions that we have. So we have got 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Again remember, अगर यहाँ पे मैं 2, 4, 6 लेके चलूँगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा. Even though my readings are going to be just fine, even though my graph is going to be just fine, but the rule that CAI uses is that you need to use more than half the graph provided. So इस वजह से आप जितना maximum possible scale आप use कर सकें आप वो use करेंगे. सही है. Now this right here was time in minutes. Very important to label your axes. Now यहाँ पे अगर हम देखें तो how many divisions do we have? We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 and 10। अब हमें वाई एक्सिस के ऊपर 0 से लेकर 10 तक जाना है, तो हम इसको रखते हैं 1 से लेकर 10। ठीक है, सो दिस राइट हियर इज गोइंग टू बी 1 2 3, then we've got 4 5 6, then we've got 7 8 9 and 10। ठीक है, तो 1 से लेकर 10 तक जो है वो हमने इसको बना दिया है यहाँ पे। ऑफ कोर्स आई एम गोना हैव टू जूम आउट टू ड्रॉ दिस मोर एक्यूरेटली, सो वी आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट इन अ व्हाइल। It's all in 1 minute intervals, ठीक है, so that's not a big problem for me. So values are 1.4 3.2 4.9, so एक एक करके plot कर लेते हैं। So your values are 1 पे it's 1.2, 2 पे it's कितना था 3.2 and 4.9, so then we've got 3.2। अगेन डॉट बनाने के बाद आप सर्कल करेंगे, पिछले पेपर में भी ये बात डिस्कस की थी। Then we've got 4.9, so that's somewhere around here. So after that 6.7 8.1 6.7, so 6.7 must be here, 8.1 must be here, 9.7 must be here। ठीक है जी, so हमने जो है ये पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। So once we've drawn or once we've plotted the points, अब we need to draw the line of best fit. That's what the question wants. तो इसको थोड़ा सा हम zoom out कर लेते हैं such that we have the whole thing. Of course 0 0 पे भी आपका एक point होगा, ठीक है। So let's draw a point on here as well, ठीक है। Now we need to draw a line. So we need to draw a line that will pass through most of the points with equal number of points above and below the line. So let's go with this one right here. यहाँ पे आपके पास we've got this point right here that's below the line, ठीक है। We've got this point right here that's above the line. We've got, yep, that's cool. So ये point भी थोड़ा सा below the line है, ये point थोड़ा सा above the line है। So I'm guessing that we got a good line of best fit। नहीं, लेकिन ये origin के through pass नहीं करे। चलो फिलहाल let's just roll with this and then let's see if we need to, if we are getting the correct। हो सकता है थोड़ा सा different आ जाए आपका आंसर, but let's see। you're going to have to make sure कि ये completely origin के ऊपर आ रही हो। चलो let's draw the correct line first। all right, so from the origin we draw a line like so। देख लेते हैं कि इस बार ये origin पर है। let's just extend it a little bit ताकि we are sure कि ये origin के through pass कर रही है। and अब आपके पास एक point below the line है, एक point above the line है। yep, so we've got a good line of best fit here। cool, ज़बरदस्त। all right, so let's go to the remaining questions। determine the gradient। so line of best fit हम लोगों ने बना ली है। so we forgot to label this। please don't forget to label your axes। this right here is mass in grams, ठीक है। अगर आप अपनी मार्किंग स्कीम को यहाँ पे देखेंगे तो मार्किंग स्कीम क्लियरली बोलेगी कि भाई लेबल्स के ये जो है वो आपके पास 4 मार्क्स है ना टोटल यहाँ पे। yeah, so you've got 4 marks, so 1 mark would be for the correct labeling, second mark would be for the correct scale, third mark would be for the correct points, and then the fourth would be for the correct line of best fit, ठीक है। so ये चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है। all right, so determine the gradient। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्रेडियंट कैसे मेजर करना है। सो यू टेक 2 exact points। let's take a point that's a relatively an exact point on the line other than the points that you have already used। so yeah, so let's take this point right here, ठीक है। let's
use a different color. ठीक है, so blue जो है वो हम use करें to mark the points that we'll use for the gradient. So we're marking this point right here. यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पे ये वाला point relatively accurate है तो इस point को mark कर देते हैं. This right here is exactly 0.5. This right here is exactly 0.8. अच्छा जी, जो ये वाला point है that's exactly 7.3. ठीक है जी, and ये वाला point जो है that must be somewhere in the vicinity of 4.6 या 4.5. Yep, that's 4.5. ठीक है, so that's 4.5. So हम marks, हम points वो लिख लेते हैं, तो that's 0.5 and 0.8 ताकि याद रहे. That's 4.5 and 7.3. Alright, so ये दो points हमारे पास आ गए, 0.5, 0.8, 4.5 and 7.3. Now we need to figure out the gradient. So gradient is y2 minus y1 upon x2 minus x1. So that's going to be 7.3 minus 0.8. y2 minus y1 हो गया. ठीक है, फॉर्मूला लिख लें तो बेहतर है. y2 minus y1 over x2 minus x1. ठीक है, so 4.5 minus 0. So this right here must be 0.8, this right here is 0.5. Let's just confirm that. Yep, you're correct. So this right here is going to be exactly 4 in the denominator. 0.8 में 7.3 में से 0.8 subtract करेंगे तो that's going to give you 6.5. And your final correct answer must be 1.625. Again, एक बार calculator से जो है वो इसको हम लोग confirm कर लेते हैं. I'm pretty sure that's going to be the correct answer. Alright, let's pull up a calculator. So 6.5 divided by 4. So yeah, that's 1.625. Cool, ज़बरदस्त. अच्छा जी, so ये हमारे पास जो है वो gradient आ गया. Now what do we need to do? Let's move on with the question. Use your readings from B to calculate the thermal energy supplied to the water. ठीक है, V हमें पता है, ऊपर हमने निकाल लिया था. I भी हमें पता है. Again, we took the values over here on the very first page. So that's 13.5 volts and 4.6 amperes current. So 13.5 volts. Current जो है that's 4.6 amperes. Time question बता रहा है that's 6 seconds. ठीक है. So your answer is going to be multiplying all of them. So 6 times 13.5 should give me 81. And 81 times 4 is gonna give me 324. 81 times 6 should give me 48.8. So 324 plus 48. 324 plus 48 should give me 372 and then 0.8 add हो जाएगा. So 372.8 या again approximately. चलो calculator use कर लेते हैं. Let's use a calculator to figure that out. So we've got 13.5 times 4.6 times 6. That gives me 37. अच्छा ये 6 seconds है, sorry ये 60 है, my bad. So 3726 joules. अब जाहिर सी बात है this right here would not be the correct answer, of course. 2 या 3 SF के ऊपर आप आंसर देंगे. So your correct answer would be either 3700 joules or you can say 3720 joules. We have used 3 SF before. ऊपर आंसर देते हुए पहले पहले पेज पे हमने 3 SF यूज़ किया था, तो you're going to answer that. And over here as well, आप 1.63 कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा. ठीक है, so your correct answer would be 1.63. Again, gradient का कोई unit नहीं होता, so you don't need to worry about the unit there. अलबत्ता यहाँ पे चले खैर जूल्स आपको आगे यूनिट दिया हुआ है, so you don't need to write that down.
and your specific latent heat of vaporization can be calculated using the equation. So Q, that's 37. जाहिर सी बात है, आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ करोगे. जो एग्जैक्ट वैल्यू आई थी पहले, यू आर गोइंग टू यूज़ दैट फॉर कैलकुलेशंस. एंड जो एग्जैक्ट वैल्यू आई थी पहले ग्रेडियंट की, यू आर गोइंग टू यूज़ दैट फॉर कैलकुलेशंस एज वेल. कैलकुलेशंस के लिए याद रखिएगा कि आप एग्जैक्ट वैल्यूज़ यूज़ करेंगे. If you wanna figure out how to store values so that you can use them easily later in the question, you should watch my videos on how to use a calculator to do various stuff. उसके अंदर ये मैंने explain किया हुआ है. So let's go for the calculator. Let's do 3726 divided by 1.625. So that gives me 2292.9. So 2292.9, 2292.9 को हम 90 joules per gram कर देते हैं. So yeah, so 229.9 था आंसर, जिसको हमने उठा के राउंड ऑफ कर दिया. 3 significant figures to 2290. The student results in C show that the mass of the beaker and water just as the water starts to boil is less than the mass of beaker and water at room temperature. तो in that case explain the difference. So जाहिर सी बात है, आपको हीट करने में थोड़ा सा टाइम लगा होगा, and during that time some of the water evaporates, hence the difference in mass. So water will evaporate as it is heated. We don't mean to say कि as water is because water is heated it's going to evaporate, but as you are going to heat it, it's going to take time for water to reach the boiling point, and during that time there will be evaporation. Okay, so yeah, we can say that. Part G says thermal energy is lost by conduction through the sides of the beaker during the experiment. This means that the value of LV in this experiment is greater than the accepted value. Explain how the loss of energy through the sides of beaker causes the difference. अब जाहिर सी बात है कि what you are measuring is the total amount that was given or gained by the water. हम assume कर रहे हैं कि जो ऊपर आपने 3726 joules of energy आपने दी है पानी को, we are assuming that all of it was used to evaporate water. But actually not all of it was used, some of it was lost. So it must be what? ये 3726 जो हमने यूज़ किया है, ये एक्चुअली वैल्यू जो यूज़ करनी चाहिए वो थोड़ी कम होगी. अब जाहिर सी बात है, अगर न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो रही है तो ओवरऑल latent heat of vaporization भी कम होगी. So you can either say that you can say mass जो है वो एक्चुअली कम evaporate होगा. तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन से वैल्यू ऑफ क्यू, जो हमने इनिशियली डिस्कस किया, वैल्यू ऑफ क्यू स्मॉलर. ठीक है. वी कैन ऑल्सो से दैट a smaller mass has evaporated. Smaller mass has evaporated. मतलब जो अमाउंट ऑफ पानी, क्योंकि हम तो अज्यूम कर रहे हैं कि 3726 जूल्स ऑफ एनर्जी पानी ने एब्जॉर्ब किया ना, और उसमें से एक्चुअली सम गॉट लॉस्ट, जिसकी वजह से जो एक्चुअल मास ऑफ वाटर एवापोरेट हुआ है वो थोड़ा कम हुआ है. सो ये जो ग्रेडियंट है जो 1.625 हमने निकाला है, ये एक्चुअली एक स्मॉलर वैल्यू है. आपका एक्चुअल ग्रेडियंट जो है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, अगेन लीडिंग टू अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ द latent heat of fusion. Smaller mass has evaporated, hence actual gradient must be more. मतलब जो हमने ग्रेडियंट अभी कैलकुलेट किया है वो कम है. जो एक्चुअल ग्रेडियंट होना चाहिए था, अज्यूमिंग कि नन ऑफ द एनर्जी गॉट लॉस्ट, वो ज़्यादा होना चाहिए था. ठीक है, जिससे अगेन आपकी वैल्यू जो है वो कम होगी. सो अगेन न्यूमरेटर कम है, क्यों? क्योंकि 3726 इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाय द वाटर. ग्रेडियंट ज़्यादा होना चाहिए, क्यों ग्रेडियंट ज़्यादा होना चाहिए? उसका रीज़न ये है कि अगेन करंटली the mass of water that we are assuming got boiled off is actually less than the actual value.
assuming that all of the energy is being absorbed by water. Then the question says, state how the loss of thermal energy can be reduced. ऑल राइट, सो आप इसको इंसुलेट कर सकते हैं, आप वाटर बाथ यूज़ कर सकते हैं, अगेन लॉट ऑफ डिफरेंट, यू कैन कवर इट, सो ये किसी किस्म का कवर जो है वो यूज़ कर सकते हो, बट खैर कवर यूज़ करोगे तो बॉइलिंग नहीं होगी, तो नहीं, कवर कवर वुड बी अ रॉन्ग थिंग टू से ओवर हियर, बट यस आई थिंक व्हाट यू शुड डू इज़ के इंसुलेशन, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन ने जो है यही बोला है ना कि हीट गॉट लॉस्ट फ्रॉम द साइड्स, तो साइड्स को हम क्या कर लेंगे, इंसुलेट कर लेंगे, सो इंसुलेट द साइड्स वुड बी द बेस्ट आंसर ओवर हियर, इंसुलेट द साइड्स, ठीक है, in the context of the question the best answer would be to insulate the sides, period. All right, that's for question number 1. Now we move on towards question number 2. Student uses, again, too much information. Calculate the mean thickness of one sheet of paper. The folded sheet is now 32 sheets and the thickness of the folded paper is 0.4 centimeters. So that should be fairly simple. 0.4 divided by how much? 32 sheets. So that must be 5 upon 4. So 5 upon 4 is going to give you 0. खैर, अगर हम 8 से कैंसिल करेंगे तो वो 5, लेट मी, खैर आपके पास कैलकुलेटर होगा, सो यू डोंट नीड टू थिंक लाइक दैट. व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि दिस राइट हियर 0.4 अपॉन 32, अगर मैं ऊपर 40 अज्यूम करूँ तो नीचे 32 है, सो दैट्स गोना गिव मी 5 अपॉन 4, बट खैर अगेन यू डोंट हैव टू कंसिडर इट दैट वे, चलेगा, आपके पास कैलकुलेटर है, आप इसको सॉल्व कर लें. Method 2 takes the reminder students' results are calculate the mean thickness. All right. So इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी आपने देखा कि I was skipping a lot of the information that was provided because most of the questions are pretty straightforward. ये कैलकुलेट करो, वो कैलकुलेट करो, वो आपको बता देगा. अब mean thickness of pack चाहिए आपके पास, and calculate the mean thickness of the pack. Give your answer to two significant figures. तो मीन थिकनेस ऑफ द पैक जो है वो आपके पास कितनी आ रही है, आपके पास 3 रीडिंग्स हैं, तो आप मीन थिकनेस जो है वो सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आपके पास मीन थिकनेस आ जाएगी, राइट. सो 4.3 प्लस 4.3 दैट्स 8.6, 8.6 प्लस 4.4 इज 13, 13 डिवाइडेड बाय 4, so 4.3 plus 4.4 plus 4.3 all divided by 3 is going to give me 13 over 3, and that's going to be 4.3 recurring. So we can just write it as 4.3 period. Calculate the mean thickness of one sheet of paper. अब यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी sheets of paper थी. So you essentially had 32 sheets of paper. Student takes the remainder of the paper. ठीक है, रिमाइंडर 500 है, 500 में से 32 इसने पहले निकाल लिया था, if I'm not wrong. Folds the paper and takes one sheet, so 499. All right, ठीक है, so हम इसको 499 से डिवाइड कर लेते हैं. So 4.3 divided by 499 is going to give me what? So we need to use a calculator for that. So you've got 4.3 divided by 499, so your answer is 0.0086. ठीक है, so 0.0086, 0.0086. अगेन प्लीज़ रिमेंबर, मैंने लिखा तो यहाँ पे 4.3 है, बट एक्चुअली आप 4.3 रिकरिंग यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है. वेन एवर यू टेक अ प्रीवियस पार्ट्स आंसर, तो आप अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू मतलब 4.3 यूज़ नहीं करेंगे, आप 4.333 जो आपकी रिकरिंग वैल्यू है वही यूज़ करेंगे to make your answer as accurate as possible. State one method of measuring the thickness of sheet that is more accurate. Give one reason for your answer. ठीक है, सो अगेन अब यहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपके पास जो फोल्डिंग वाला मेथड है, एक सेकेंड, स्टेट विच मेथड ऑफ मेजरिंग द एवरेज थिकनेस इज़ मोर एक्यूरेट. तो इसने जो है वो टोटल थिकनेस निकाल ली है पूरे स्टैक की एंड देन यूज्ड इट, उसने जो है वो फोल्ड करा हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि भाई क्योंकि फोल्ड करने से आपके पास एक कर्व आ जाता है, दैट कर्व इटसेल्फ changes your values a little bit.
ठीक है। तो दैट प्लस आपने फोल्ड करने के लिए फोर्स लगाया है, फोर्स लगाने से पेपर डिफॉर्म हो सकता है, दैट कैन बी एन आंसर। ठीक है। एंड जाहिर सी बात है कि व्हेन यू हैव फोल्डेड शीट्स ऑफ पेपर, योर थिकनेस इज नॉट नेसेसरली यूनिफॉर्म थ्रू आउट। आपका जो फोल्डेड पेपर है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म थिकनेस का नहीं होगा। So we are going to say कि method 2 जो है it's much more accurate. Method 2 is more accurate as the sheets of paper are not deformed. So yeah, as the sheets of paper are not deformed, and we are going to say that the thickness of the stack is uniform compared to the folded one where the thickness of the stack would not be uniform. ठीक है, तो इन दोनों में से वैसे कोई एक लिखना है, मैंने दोनों लिख दिए हैं। ठीक है। So let's move on towards question number 3. Student uses pins to locate the image of an object formed by a plane mirror. All right, the student places an object pin P in front of the mirror, looks into the mirror and sees an image, blah, blah, blah. The positions of the pins is shown in figure 3.1. Without moving the object pin P, the student views the image of P from a different position and repeats the procedure with two more pins, Y and Z. All right, so the positions of all the pins shown in figure 3.2. तो all right, पहले जो है वो इस एंगल से देखा था, WC1 WNX बन गया। अब दूसरा एंगल से देख रहा है, तो अब जो है वो Y and Z वो इस तरह से बन रहा है। On figure 3.2, draw a line joining X and W and continue the line until it hits the mirror. Label the point where the line meets the mirror with letter A. Cool, repeat this for Z and Y as well. Label the point where the line meets B. Okay, so we are going to draw a line that passes through W and X, and we are going to label this A. Okay, we are going to do the same for Y and Z. So this one I'll have to change. Yep. Okay. And ये जो है ये क्या बन जाएगा? This right here would be labeled point B. So this right here is one point, this right here is the second point. Alright, so probably law of reflection जो है वो यहाँ पर आगे आ जाएगा. So हमने label कर लिया on figure 3.2, draw the two incident rays from P that produces the reflected rays that you have drawn in 1. Cool, eh? Let's use a different one. Reflected ray 1 would be, let's give blue. This right here would be the incident ray for A, and this right here would be, oops, need to select this again. This right here would be the incident ray for B. All right, cool. We did that. Then the question says, ye measure the angle of incidence of ray PA. So in that case, you can do it in a lot of different ways. अब जाहिर सी बात है मेरे पास protractor नहीं है, so I'm just going to assume कि आपके पास जो angle आ रहा है वो कितना आ रहा है. But this right here looks like a pretty even line, so I'm going to, जाहिर सी बात है आप पहले, so you can do one of two things. You can either say कि भाई मैं पहले normal बना लेता हूँ, सही है, दोनों sides पे. उसने कहाँ पे incidence निकालने का बोला है? Measure the angle of incidence of PA, ठीक है, so not this one, सही है, इसको मिटा देते हैं, not this one. So यहाँ पे I can either do this, measure the whole angle and divide by 2. Why? Because the angle of incidence and reflection are exactly the same. Second thing that I can do is कि मैं actually ये वाला angle figure out कर लूँ. So this looks like a pretty even 90 to me, maybe 85 या 90 के आसपास कहीं लग रहा है मुझे ये. तो I can say कि अच्छा ठीक है, this right here is going to be what? This right here is going to be maybe a 45 degrees, assuming that वो जो है वो 90 है, ठीक है. So I'm assuming that this right here is 45 degrees, तो मैं यहाँ पे angle of incidence लिख दूंगा. कह दिया मैं angle of incidence is
45 degrees. On figure 3.2, continue the rays until they meet behind the mirror. This is the position of the image. Label the position with I. All right, that's cool. We can do that. Um, अभी तो फिर इसी कलर के साथ जो है वो कंटिन्यू कर लेते हैं. So या तो फिर I'll just draw this out. I'll just draw this out. So one is this line right here. The other is this line right here. थोड़ी सी off बनी है ये. The other one is this line right here. So this right here continued. यहाँ पे हमारी image I बनेगी. ठीक है. So this right here is where the image I is going to form. Of course, the image distance and the object distance is going to be exactly the same. अच्छा हमने I बना दिया. Student says the distance of the pin P from the mirror is equal. Measure and record the distance. अब जाहिर सी बात है आपका equal आना चाहिए. अगर equal नहीं आ रहा means you did something wrong. So you're going to use a scale to measure these distances. Of course, looking at it, my distances seem off. तो मैं इसको एक बार वापस बना लेता हूँ. So this right here is going to be something like this. This right here is going to be something like this. So yeah, this one seems to be a bit more realistic. ठीक है, ये distance और ये distance अब जो है वो equal लग रहा है. ठीक है, so again you need to do the exact same thing. अगर आपको distance और image जो है वो off लग रहा है तो you're going to figure it out. This right here seems like between around 2 to 3 centimeters. तो मैं बीच में आधा करके जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह देता हूँ कि भाई ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है. यूनिट मेरे हाथ में है, मैं कौन सा यूनिट रख रहा हूँ, तो इट्स सेंटीमीटर्स. द क्वेश्चन इज टेलिंग मी टू पुट द यूनिट्स. State giving a reason whether your results agree with the statement made by the student used. तो वी आर सेइंग कि ठीक है, हाँ हमारे पास अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपका एग्जैक्टली डिटो 2.5 ही आ रहा हो, बट हो सकता है किसी का 2.47 आ रहा है और 2.5 आ रहा है, तो उसमें भी चल जाएगा. आप कह सकते हो कि भाई इट्स रिलेटिवली वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऑलमोस्ट इक्वल टू. तो हेंस एक्सेप्टेबल है कि हाँ ठीक है, दोनों चीज़ें इक्वल होंगी. So we are going to say that state the reason whether your results agree. So we are going to say yes, the results agree because equal values. In this case, I'm assuming equal values. आप जाहिर सी बात है assume नहीं करेंगे, आप actual scale से जो है वो इसको measure करेंगे. Yes, equal values, and that's going to be your answer. ठीक है? All right, moving on to the next question. Question number 4 says what? Student connects three identical lamps, P, Q, and R, to a cell and a switch to make a circuit. All right. Lamp P is connected in series. Lamp P is connected with lamp R, the switch, and the cell. Lamp Q is connected in parallel to both P and R. Draw the circuit diagram. ठीक है, so we've got a cell. ठीक है, switch positive के साथ connected होगी. All right. And then we've got P is connected in series with R, so we are going to say P connected in series with R. Right, इसको label कर दिया P, उसको label कर दिया R. And Q is connected in parallel to both, तो यहाँ से एक parallel connection लेके उसको हमने Q से join कर दिया. ठीक है, तो this right here would be how your circuit is connected. Again, this right here is positive, this right here is negative. Conventional current को हम usually prefer करते हैं O level physics के अंदर. So you're going to draw the switch with the positive because that's where your current starts in the circuit. Then the next says B, the student disconnects, reconnects when the switch is closed. The student notices that lamp P lights dimly, lamps Q and R do not light. 5 possible explanations are shown. The cell needs recharging. The currents in the lamp Q and R are too small. Okay, the filament in P is broken. The filaments R, Q and R are broken. खैर P में तो अगर फिलामेंट ब्रोकन होता तो वो लाइटली डिम, तो ये तो डेफिनेटली नहीं हो सकता. ठीक है, फिलामेंट्स Q एंड R आर ब्रोकन. अगर Q और R दोनों ब्रोकन होते तो इन दैट केस आपका पूरा सर्किट ही ओपन हो जाता. योर सर्किट वुड नॉट वर्क. सो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता. देयर इज़ अ ब्रेक इन द लीड कनेक्टिंग द सेल टू लैम्प्स, तो जाहिर सी बात है फिर अगेन P वुड नॉट वर्क एज वेल. सही है,
तो this right here. So यहाँ answers are going to be, जाहिर सी बात है इससे पहले हमें सेल जो है वो यूज़ कर चुके हैं तो उसको रिचार्ज चाहिए. And the lamps, because so the reason why the Q and R are not lighting up is because the current is too small. So plain and simple. ठीक है. So yeah, that right there was this question. So this is 2021, October, November 2021, paper 4, variant 2. Inshallah, kids, I'll see you in the next video. Till then, stay safe, take care. Tata bye bye, Allah Hafiz. Bars out.